हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने अपने इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, बहुत अधिक संभावना है उनकी एग्जाम में आने की। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ चेकआउट नहीं की तो प्लीज़ वो भी चेक कीजिए। आज का हमारा 126 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 125 क्वेश्चन बायोलॉजी के मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स। 126 क्वेश्चन इज must cells secrete? Right answer is option number C, histamine. Next question है आपका स्टूडेंट्स, protoplasm theory was proposed by? Right answer is option number C, Schultz. Question number 128 है आपका स्टूडेंट्स, which theory explains the structure of protoplasm? Right answer is option number A, colloidal theory. Next question है आपका स्टूडेंट्स, DNA differs from RNA in having? Right answer is option number C, uracil. Next question है आपका स्टूडेंट्स, complex carbonic acid and most important macromolecules of cells are? Right answer is option number C, nucleic acid. Next question है आपका स्टूडेंट्स, it causes the genetic information and controls the function of cell. Right answer is option number A, DNA. Next question है आपका स्टूडेंट्स, the process both linear and circular molecules of DNA. Right answer is option number A, eukaryotic cells. Next question है आपका स्टूडेंट्स, question number 133, which of the following is the term for a human cells that contains 22 pairs of autosomes and 2 pairs X chromosomes? Right answer is option number B, a female somatic cells. Next question है आपका स्टूडेंट्स, term genetic was given by? Right answer is option number C, W. Batson. Next question है आपका स्टूडेंट्स, Mendel is famous for his work on? Right answer is option number A, resume. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग depicts the Mendel's D hybrid ratio? Right answer is option number B, 9:3:3:1. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 137, Mendel choose pea plant because? Right answer is option number B, they were having 7 pair of contrasting characters. Next question है आपका स्टूडेंट्स, question number 38, an exceptions to Mendel's law is? Right answer is option number B, law of segregation. Next question है आपका स्टूडेंट्स, one genuine enzyme hypothesis was proposed by? Right answer is option number A, Badal and Tarun. Next question है आपका स्टूडेंट्स, who used heavy nitrogen for proving semi-conservation DNA replication? Right answer is option number A, Moselson and Stenil. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 142, in 1900 AD 3 biologists independent discovers Mendel's principle. They were? Right answer is option number A, D. Rice, Correns, T. Skepmark.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143, 9:3:3:1 रेशो इज मॉडिफाइड टू 9:7 रेशो ड्यू टू, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लीमेंट्री जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 144, जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 64 codons each with 3 nucleotides। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 145, हु postulated the chromosomes theory of inheritance, right answer is option number D, Sutton and Boveri। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 146, the process by which RNA is made from DNA and protein from RNA are respectively, right answer is option number A, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 20 क्वेश्चंस 126 टू 146 जो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक, उन फ्रेंड्स तक जिन्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड और भी अच्छी और यूज़फुल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।